Good day to all. My name is Amreen Khan. I am from ECNEE Department, Faculty of Education, University of Sindh. Now, beta, it's your 11 week from curriculum and textbook subject, and this week consists of process of textbook development in Pakistan, style and content of textbook. Now it's your fifth unit. Inshallah, it will be started tomorrow. Essential characteristic of an effective textbook. Our process of textbook development in Pakistan. He stated the textbook development in a journal way. Up now, it's a time for the establishment. Okay, when the textbook establishment was started in Pakistan after its independence. So the first point, see the period from 1947 to 1962 considered as an error in this field. Now, why we call the period of trial and error from the 1947 to 1962? Because it's the time of infant Pakistan. इस वक्त पाकिस्तान एक न्यूली बॉर्न कंट्री है, तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वो ऑफ कोर्स ट्रायल और एरर बेसिस पर ही करेंगे. In 1962, on the recommendation of the Higher Power Committee, Textbook Board was established in the two provinces of Pakistan under the legislative provision of the West Pakistan Textbook Board Ordinance. Now it's the time of establishment of a textbook board in the two provinces of Pakistan, the West Pakistan or the East Pakistan. It's a time after the partition of a Bangladesh. 1971 में बांग्लादेश का पार्टीशन जो था, बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन चुका था, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन चुका था. तो in 1971 development of a textbook from classes 1 to metric has been the sole responsibility of a 4 provinces provisional textbook board. अब यहाँ पर आपके दो जो वेस्ट और ईस्ट टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं वो खत्म हो गए हैं क्योंकि पार्टीशन हो गया है और अब आपके पास सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान बचा है. तो इट्स अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द 4 प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड. दीज आर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, NWFP टेक्स्ट बुक बोर्ड और बलूचिस्तान टेक्स्ट. ये टेक्स्ट बुक बोर्ड की बिगिनिंग है. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि 1947 से 1962 इट्स अ पीरियड ऑफ अ ट्रायल एंड एरर. व्हाट वाज द प्रोसेस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक? ये किस तरह से चारों प्रोविंसेस वर्क करते हैं ये आप देखेंगे. नाउ इट्स अ फिगर ऑफ अ करंट प्रैक्टिस फॉर टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट एंड अप्रूवल इन अ गवर्नमेंट. फर्स्ट पॉइंट आप इस पे देखिएगा, कहते हैं the MOECW prepares the curriculum documents. MOECU means Ministry of Education Curriculum Wings. Now the Ministry of Education Curriculum Wing transfer the copy of curriculum to the each textbook board. अब आपका मिनिस्ट्री जो है वो करिकुलम की कॉपी इन चारों बोर्ड्स में सिंध, पंजाब, NWFP, बलूचिस्तान इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. Now the textbook board asks is registered authored for writing the entire book or its part. After this request, the team of referees mean referees called the subject specialist और द टेक्स्ट बुक बोर्ड does blind review. अब आपके पास जो मुसन्निफ कह लें, आप जो ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनकी टीम है वो इसका ब्लाइंड रिव्यू करेंगे. द रेफरीज टीम सेलेक्ट द बेस्ट 10 ऑथर्स वर्क and the subject specialist of the textbook compile these in the form of a 3 books manuscript. अब यहाँ पर जो आपकी टीम है रेफरीज की, राइटर्स की जो टीम है, वो सारे के सारे जो ब्लाइंड रिव्यू आपके पास आया है उसमें से 10 बेस्ट ऑथर जो हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं. देन दे कंपाइल दीज कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ अ 3 बुक मैन्युस्क्रिप्ट. ड्राफ्ट कॉपी आएगी जो कि अभी फेयर नहीं है, उससे भी आगे फेयर होना है. एंड द 3 मैन्युस्क्रिप्ट्स आर फॉरवर्ड टू द Ministry of Education Curriculum Wings for the approval. And now these manuscripts, 3 draft copies यहाँ पर approved हुई हैं और again this copy go back to the Ministry of Education for the verification. Then Ministry of Education calls a 3 days NCRC meeting. NCRC stand for National Curriculum Review Committee. National Curriculum Review Committee की मीटिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करिकुलम विंग्स 3 दिन तक कंटिन्यू हैं और
ये जितने भी 3 मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं इन पर वो वर्कआउट करते हैं। The committee comprises one expert from each textbook board of Pakistan, number of a Ministry of Education curriculum wings, and the subject specialist of the textbook. This meeting committee consists of one expert from each textbook board of Pakistan, member of Ministry of Education curriculum wings, and the subject specialist of the textbook. And now, after during the meeting, the subject specialist of the textbook educate the manuscripts. Now it's start to approval and start to the approval or the review of the textbook. And now finally यहाँ पर जो आपके पास manuscript हैं वो finalize हो जाते हैं. And then the NCRC National Curriculum Review Committee select the best of the 3 manuscripts or compile a new one out of the 3 and suggest further addition, deletion, substitution in the selected or the newly compiled manuscript. ये manuscript जो है, if the selected or the newly compiled manuscripts is far behind the objectives of the national curriculum, the subject specialist is asked to get it prepared again. अगर फोर्थ वन वाले मैन्यूस्क्रिप्ट में आपके ऑब्जेक्टिव्स नेशनल करिकुलम को अचीव नहीं कर पाते, यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कहेंगे कि आप ये बुक दोबारा लिखें, ये नेशनल करिकुलम को अचीव्ड नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन अगर if it's need a minor changes, a conditional NOC is issued and the subject specialist assured the NCRC that the changes will surely be incorporated. लेकिन अगर वहां पर कोई भी माइनर सी कंडीशंस हैं कि वहां पर चेंज करना है, some sort of a grammatical mistake, some sort of a graphic designing, some sort of a means compilation or the arrangement of a content, अगर इस तरह की कोई भी आपके पास इशू आता है तो फिर एनओसी मींस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपके पास नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है. लेकिन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एनसीआरसी को अश्योर करते हैं कि ये जो भी यहाँ पर से माइनर मिस्टेक्स आई हैं हम इसको सही कर लेंगे. ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता क्योंकि वहां पर आ गई है ऑब्जेक्शन. सम kinds of a abbreviation being a curriculum and textbook students you have to be know about these abbreviation: MOE, CW, Ministry of Education and Curriculum wings, TB, textbook, SS, subject specialist. And now there is a NCRC National Curriculum Review Committee. Now there is a NOC means no objection certificate. So these are the process of a government sector. ये आपका टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट है बट इन द गवर्नमेंट सेक्टर. और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यू सी दिस इज अ प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिस ऑफ अ टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट. प्राइवेट में थोड़ी बहुत सी चेंजेस होती हैं, सच एज चेंजेस ऐसी नहीं होती, लेकिन देख लेते हैं कि हम क्या चेंजेस होती हैं. Now the Ministry of Education curriculum wings prepared curriculum documents as the federal government or the federal wings give the approval for the curriculum documents for the private publisher collect a copy of the curriculum. Now there is a private publisher और यहाँ पर आप देखें कि टेक्स्ट बुक बोर्ड्स गवर्नमेंट सेक्टर में करिकुलम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जाती है आपके चारों प्रोविंसेस के टेक्स्ट बुक बोर्ड पे, लेकिन यहाँ पर कौन प्राइवेट पब्लिशर्स कलेक्ट द कॉपी ऑफ अ करिकुलम. यहाँ पे प्राइवेट पब्लिशर कॉपी को कलेक्ट करता है. Publisher request an individual or a group of authors develop a textbook or complete series on a subject. Now the publisher requested the individual or the group means यहाँ पर वो रेफरीज उनके अपने जो हायर रेफरीज हैं या इंडिविजुअल ऑथर्स हैं वो उनसे कंसर्न करते हैं और फिर कहते हैं कि आप ये हमारी कंप्लीट बुक या इसका कंप्लीट सीरीज हमें लिख कर दें. The publisher forward the books to the Ministry of Education curriculum wings for approval. When the private author compile the graph or making a manuscript, then again it's go to the Ministry of Education curriculum wings
for the approval. Now there is again 3 days CRC meeting, National Curriculum Review meeting for the Ministry of Education curriculum wings. And now these committees, experts, number of curriculum wings and the person from the publishing committee. अब यहाँ पर the experts of the curriculum wings as well as the private publication company members are the member of this committee. And now during the meeting, the person, the most of the case subject specialist from the publishing company educates the book in the manuscript. कहते हैं now during the meeting the person, और वो person कौन सा हो सकता है, कहते हैं most probably the person was a subject specialist. ठीक है, from the publishing company educate the book manuscript. And now finally the NCRC select, reject the books or suggest further addition deletion in it. National Curriculum Review Committee suggest ke what sort of knowledge you have to be added or what things have to be amended from this book. If the book is far behind the as the same object we have studied in a government sector, if the book far behind the objectives of the national curriculum, the representation of the publishing company is asked to develop a new book again. Means that your book not achieve the national curriculum objectives, not achieve the target according to the national curriculum objectives, means the approval यहाँ पर book का नहीं होगा. और इफ इट compete, अगर वो नेशनल करिकुलम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाती है और देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ माइनर मिस्टेक, तो एनओसी इज इशूड, non objective certificate issue, and the representative assure the NRC that the changes would surely be incorporated. और नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटी को ये अश्योर किया जाएगा, ये उनको तस्दीक की जाएगी कि जो चेंजिंग आपने हमें कही हैं वो हम जरूर करेंगे. So this is the process of a textbook development. Do you have any question, beta? मैम जो प्राइवेट सेक्टर में जो होता है पूरा करिकुलम का, उसमें भी 3 मैन्युस्क्रिप्ट दिए जाते हैं. But the manuscripts are not very emphasized there, ना. यहाँ पर manuscript को इतना emphasize नहीं किया जा रहा. It's mean that कि private publication itself finalize the copy of the textbook or the content. वो खुद से ही उसको फाइनलाइज करके और आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करिकुलम विंग को अप्रूवल के लिए दे देते हैं. इफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सॉ दैट किड्स अचीव द नेशनल करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स तो प्रूफ कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि 3 मैन्युस्क्रिप्ट क्यों दी जा रही है, बिकॉज इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट. यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आल्सो कंसर्न विद द गवर्नमेंट सेक्टर, टेक्स्ट बुक बोर्ड इज आल्सो कंसर्न विद द गवर्नमेंट सेक्टर, बट देयर इज अ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर. दैट्स व्हाई द प्राइवेट सेक्टर बाय इटसेल्फ वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट फाइनल करके लेके आते हैं. नाउ द गवर्नमेंट हैव द ड्यूटी जस्ट टू चेक द इट्स achieve the objective of a national curriculum or not. There is no emphasis of a manuscript. Another question.